इज मैटर अराउंड अस प्योर। जब क्लास 9th का इस चैप्टर हम लोग देखेंगे हाउ डू वी जज वेदर ए मिल्क, घी और बटर, अ साल्ट, स्पाइसेस, मिनरल वाटर और जूस दैट वी बाय फ्रॉम मार्केट इज प्योर। ये साल्ट हो या फिर मिल्क, मिनरल वाटर हो या और कुछ भी हो, हम लोग कैसे कह सकते हैं कि ये प्योर है या नहीं है। लेट अस सी। You have noticed the word pure written on the back of the consumable. For a common person, इसका मतलब है कि no adulteration, no mixing of anything else, इसी को हम pure बोलते हैं. But for scientists, all these things are actually mixture. For scientists, these are mixture of different substances, hence not pure. अगर example के हम लोग बात करेंगे, milk actually is a mixture of water, fat and protein etc. When scientists say that something is pure, साइंटिस्ट जब बोलते हैं कि कुछ चीज प्योर है तो इससे क्या इन्फ्लुएंस निकालते हैं? It means that all the constituent particles of substance are same in their chemical nature. They are same in the chemical nature. A pure substance consists of single type of particle, मतलब the particles are uniformly in nature. There is no adulteration or mixing of anything. As we look around, we can see most of the matter around us exists as a mixture of two or more pure components. For example, sea water है, चाहे मिनरल्स हो चाहे सॉइल हो, these all are mixture. अब हम लोग पढ़ेंगे what is mixture. A mixture are the constituent of more than two pure substances. More than two pure substances mixed together to form a mixture. We know that dissolved sodium chloride can be separated from water by physical process of evaporation. The dissolved sodium chloride NaCl को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, कैसे? बाय द हेल्प ऑफ इवेपोरेशन. हेंस सोडियम क्लोराइड इज इटसेल्फ a pure substance and cannot be separated by physical process. It is a chemical constituent. उसी तरह हम शुगर के बारे में बात करेंगे. शुगर एक प्योर सब्सटेंस है जो कि consist only one kind of pure matter and its composition is same throughout. सो ड्रिंक और जो सॉइल है नोट a single pure substances है. Whatever be the sources of the pure substance may be, it always have same characteristic properties. अब हम लोग टाइप्स ऑफ मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे. इसमें हम लोग पढ़ेंगे होमोजेनस मिक्सचर और हेट्रोजेनस मिक्सचर. डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ component of that mixture we can have different types of mixture. अब एग्जांपल पढ़ेंगे. लेट अस डिवाइड क्लास इनटू 4 ग्रुप ए बी सी डी में. ग्रुप ए टेक्स a beaker containing 50 ml of water and a spatula full of copper sulfate, और ग्रुप बी take 50 ml of water to a spatula full of CuSO4 powder in a beaker. Group C or D can take different amount of copper sulfate and potassium permanganate or common salt and mix the given component to form a mixture. अब उसके बाद क्या करना है? रिपोर्ट द ऑब्जर्वेशन ऑन द यूनिफॉर्मिटी इन द कलर. ग्रुप ए एंड बी हैव obtained a uniform mixture, uniform composition. This is called homogeneous mixture. किसको बोलते हैं? The composition of the mixture is throughout the component. This is called homogeneous mixture. Other example of homogeneous mixture are salt dissolved in water, sugar dissolved in water, मतलब पूर्ण रूप से घुल जाए. Compare the color of solution of the two group. Though both the group have obtained CuSO4, but the intensity of color of the solution is different. This shows that homogeneous mixture can have variable composition. अब ग्रुप सी और ग्रुप डी के बारे में बात करेंगे. They have obtained mixture which contain physically distinct part and have non-uniform composition. This is called heterogeneous mixture. The composition of this mixture may be different. Non-uniform मिक्सचर ऑफ जैसे सोडियम क्लोराइड और आयरन फाइलिंग्स को मिला देंगे, क्या वे लोग आपस में मिलेंगे? नहीं. दिस इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर कंपोनेंट फॉर्मिंग हेट्रोजेनस मिक्सचर.
अब एक्टिविटी 2.2 पढ़ेंगे. लेट अस अगेन डिवाइड द क्लास इनटू 4 ग्रुप. ग्रुप ए के पास CuSO4 होना चाहिए. फिर क्रिस्टल ऑफ CO4 टू ग्रुप डिस्ट्रीब्यूट करना है. 1 spatula full of copper sulfate to group B, chalk powder of wheat flour group C, few drops of milk or iron to group D. Each group should add the given sample in water and stir properly. Are the particles visible? Direct a beam of light from a torch through the beaker containing the mixture and observe from the front. सामने से देखेंगे कि क्या सब मूवमेंट शो कर रहा है बीम ऑफ लाइट. हम लोग बीम ऑफ लाइट डालेंगे और देखेंगे क्या मूवमेंट शो कर रहा है क्या नहीं. Leave the mixture undisturbed for a few minutes and set up the filtration apparatus in the meanwhile. फिल्टर द मिक्सचर करेंगे, मिक्सचर को फिल्टर करेंगे विद द फिल्टर पेपर और रिजल्ट को देखेंगे. व्हाट वी विल इंटरफेयर फ्रॉम दिस एग्जांपल. नाउ we shall learn about solution suspension and colloidal solutions in the plane section. What is solution? Solution मतलब solute और solvent मिलके क्या बनाता है solution. Solution is a homogeneous mixture of two or more substances. दो या दो अधिक substances मिलकर क्या बनाता है solution बनाता है. You can come across various types of solution in your daily life. जैसे lemonade, soda water are the example of solution. Usually we think the solution is a liquid that contain either solid, liquid or gas dissolved in it. But we can also solid solution जैसे alloys. Alloys क्या है? Alloys is also a solid solution with a mixture of two or more than two metal or non-metal. Gaseous solution भी हो सकता है जैसे air में different types of gases are involved. In a solution there is homogeneity at the particle level. For example, lemonade tastes sugar throughout. This shows that the particle of sugar or salt are evenly distributed in the solution. अब हम लोग बात करेंगे कि what are alloys. Alloys are a mixture of two or more metal or non-metal. Cannot be separated into their other component with their physical method. जैसे एग्जांपल हम लोग करेंगे brass is a mixture of approximately 30% जिंक और 30% जिंक और 70% कॉपर में क्या है ब्रास रहता है. दिस इज एलॉयज. सॉल्यूशन के पास क्या है एक सॉल्वेंट है. सॉल्यूशन इज नथिंग बट सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन. अब सॉल्यूट कहते हैं किसको और सॉल्वेंट कहते हैं किसको, यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है. द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व द other component in it. Usually the component present in large amount is called solvent. The component which is in larger amount is called solvent. The component which is dissolved in the solvent जो solvent में घुल जाए usually less amount में रहता है उसको हम solute कहते हैं. और solute plus solvent is equal to solution. जैसे example हम लोग लेंगे solution of sugar in water is a solid in liquid solution. In this solution, sugar is the solute and water is solvent. Solution of iodine in alcohol known as tincture of iodine has iodine solid as the solute and alcohol as the solvent. Aerated drink जैसे soda water or gas in liquid solution which contain carbon dioxide or solute and water as solvent. Properties of solution क्या है? पहला ये होना चाहिए दिस इज होमोजेनस मिक्सचर मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए. द पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर so they cannot be seen by naked eye. Because a very small particle size they do not scatter a beam of light passing through the solution. The solution particle cannot be separated from the mixture by the process of filtration. solution को हम लोग filtration के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते हैं. What is concentration of a solution? In the activity 2.2 we have observed that groups A and group B obtain different sets of solution. So we understand that solution is the relative proportion of solute and solvent can be varied. Depending upon the amount of solute present in solution it can be dilute or concentrated solution. Dilute and concentrated are comparative terms. इस एक्टिविटी में हम लोग एक देखते हैं कि टेक ए स्मॉल ये क्या बोल रहा है 50 ml वाटर वी शुड टेक इन सेपरेट बीकर, ऐड सॉल्ट इन वन बीकर
and sugar barium chloride, sugar या barium chloride in second beaker. When no solute can be dissolved, heat the content of the beaker to raise the temperature by 5 degrees Celsius. Start adding the solute again. तो ये कंसेप्ट बोल रहा है सैचुरेशन लेवल के बारे में बात कर रहा है. इज द अमाउंट ऑफ साल्ट एंड शुगर or barium chloride that can be dissolved in water at a given temperature the same. At any particular temperature, कोई खास टेम्परेचर में बात हुई, the solution that has dissolved as much solute as it is capable of dissolving is said to be saturated solution. Saturated solution कहेंगे इसको, उसमें कोई खास टेम्परेचर पे सोल्यूशन में उतना ही सॉल्यूट की जरूरत है जितना वो डिजोल्व कर सके, इसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन. इन द अनदर वर्ड, दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं when no more solute can be dissolved in solution at a given temperature is called saturated solution. When no more solute can be added at a given temperature is called saturated solution. The amount of solute present in the saturated solution at its temperature is its solubility. If the amount of solute contained in a solution is less than the solution saturation level, it is called unsaturated solution. What is unsaturated solution? If the amount of solute contained in a solution is less than the saturation level, it is called unsaturated solution. What would happen if we were to take a saturated solution at a certain temperature and cool it down? क्या होगा जब हम टेम्परेचर को राइज कर देंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन की? We can infer from the above activity that different substances in a different solubilities at the same temperature. अब कुछ हम लोग कंसंट्रेशन को किस तरह एक्सप्रेस करते हैं वो देखेंगे. जैसे मास बाई मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, क्या हो गया इसमें मास ऑफ सॉल्यूट, इसमें हमारा आएगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. This is called concentration in terms of mass. Mass by volume, mass of solute, सब में mass of solute आ रहा है, उसके बाद mass of solution. Mass volume by volume percentage of the volume of solute upon volume of solution into 100. This is called volume by volume percentage. Example 2.1 में देखेंगे, ये solution contains 40 gram common salt. 40 gram of common salt in 320 gram of water. Calculate the concentration in terms of mass by mass. Mass of solute दिया हुआ 40 ग्राम, mass of solvent क्या है 32 ग्राम. Mass of solution solute plus solvent 360, mass percentage equal to mass of solute upon mass of solution into 100, that is 11.1%. What is suspension? Non-homogeneous substances like those obtained in which solid are dispersed in liquid are called suspension. मतलब लिक्विड में सॉलिड थोड़ा बहुत डिस्पर्स होना चाहिए, उस वक्त हम लोग सस्पेंशन कहते हैं. सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, मतलब यूनिफॉर्मिटी नहीं है. इन विच द सॉलिड पार्टिकल डू नॉट डिसॉल्व, सॉलिड पार्टिकल आर नॉट गेट डिसॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम. Solid particle remain suspended throughout the bulk of medium. Particle of the suspension can be visible. What are the properties of suspension? Suspension is a heterogeneous mixture, मतलब यूनिफॉर्मिटी नहीं होगा वहाँ पे. The particle of a suspension can be seen through naked eye. Can be seen through naked eye. The particle of suspension scatter a beam of light. When beam of light is passed through the suspension, the particle gets scattered. The solid particle settles down when a suspension is left undisturbed. That is, a suspension is unstable. Suspension is unstable. When the particles settle down, suspension breaks and it does not scatter the light anymore. What is colloidal solution? अब हम लोग पढ़ेंगे what is colloidal solution. The particle of colloid are uniformly spread throughout the solution. इसमें क्या है? The particle of colloid are uniformly spread due to relative smaller size of particle as compared to that of suspension.
द मिक्सचर appears to be homogeneous। इसमें क्या हो गया, मिक्सचर वो होगा होमोजेनस, बट एक्चुअली कोलाइडल सोल्यूशन इज हेट्रोजेनस। इसका एक एक्चुअल में ये हेट्रोजेनस है, जिसका बेस्ट एग्जांपल है क्या, मिल्क। बिकॉज ऑफ अ स्मॉलर साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल वी कैन नॉट सी देम विद द नेकेड आई। बट हम उस बट व्हेन द लाइट इज पास्ट, this is a scattering of beam of light is called Tyndall effect. What is called Tyndall effect? When the light is passed through the solution,